Good morning. Good morning, Acharya madam. Good morning. Good morning. Yes, good morning, madam. Madam, let us wait for 5 minutes for others to join, and we will start within next 5 minutes. No problem. Okay? Yes. Hello.
चेतना शाह मॅडम प्रेझेंट आहेत का? Yes, sir. आर यू प्रिपेअर्ड मॅडम? Yes, sir. Okay. So can we proceed now? Yes, sir. Okay, just wait a minute. Acharya madam, we are going to do YouTube live streaming. So let me give permission to the technical support team. Gavas madam and Himanshi Mehta madam. You can Yes, sir. YouTube live streaming. Yes, sir. We have started Once YouTube that live is done, streaming, then sir. we will start the session. Yes, sir. We have started, sir. Current is outie, sir. Yes, Shall I start? yes. Good morning, everyone. Streaming सुरू झालं आहे ना? Yes, sir. Yes. You can proceed, madam. Good morning, everyone. Respected speaker for the day, Mrs. Vrinda Acharya, Principal Dr. S.B. Karande, Vice Principal Dr. Mahesh Outi, coordinators of the self-finance courses, faculty members, and students. I, Professor Chetna Shah from the Accounting and Finance Department, extending a warm welcome to each one of you for the second day of our online lecture series on entrepreneurship development organized by the Faculty of Commerce. After the series on inauguration on 10th of January 2024 by the chairperson of Gokhale Education Society's Principal Dr. S.V. Sant Madam, we were guided by Mr. Somnath Rathi, Director of Anmol Sales Corporation, Nasik, who shared insight on new tools for entrepreneurship development. Today, we will explore women entrepreneurship challenges and prospects with Mrs. Vrinda Acharya from Mumbai. Now, let us hear a brief introduction from Professor Nidhi Shah, Faculty of the Accounting and Finance Department. Over to you, Nidhi Madam. Thank you, Chetna Madam. Good morning, everyone. I am grateful for the opportunity given to introduce today's resource person, Mrs. Brinda Acharya. Mrs. Acharya brings a wealth of expertise in the textile and fashion industries with a strong background in global product development management. Currently contributing to Swaraj Fashion Private Limited in Mumbai, she plays a vital role in producing and exporting motorcycle riding outwears to USA and Europe. With over 15 years at Swaraj Fashions, Mrs. Acharya has skillfully managed operations, human relations, and business and product development. However, her true passion lies in the human resource component. In collaboration with her friend Swati, an entrepreneur, Mrs. Acharya translated her insights into action by establishing her own independent e-commerce venture, Aditi Trends. This enterprise specializes in designing, manufacturing, and distributing Indian clothing and accessories across the country, leveraging the digital marketplace and empowering women. Mrs. Acharya analyzes the power of conviction with her personal goal being
to help everyone reach their full potential. Driven by her aspirations, enthusiasm, and convictions, Mrs. Acharya conducts interactive mind training sessions drawing on her 2 decades of research and expertise. Her modular mindset training sessions, developed to address belief systems, behavioral tendencies, integrities, personal effectiveness, and decision making, aims to empower individuals in pursuing their goals and redefining their boundaries. With this, Madam thinks she can turn can I into I can. On behalf of our college, I welcome you, Madam. Over to you, Chetna, Madam. Thank you. Thank you, Nidhi Madam. Now I request today's resource person, Mrs. Vrinda Acharya Madam, to share her insight on women entrepreneurship, challenges and prospects. Over to you, Madam. Thank you very much, Chetna Madam. Let me thank Oakley College for giving me this opportunity to my most beloved subject, women entrepreneurship. I think we are going to discuss a little more about this in next 40-45 minutes. So thank you very much and thank you for joining me. Myself, Vrinda Acharya, and I've worked in different product development and entrepreneurship development. And I realized that being a woman, I realize this topic is very much hard to me. And I always feel that we face a lot of challenges as women. And that is why our emphasis on this topic would be specifically on the women entrepreneurship challenges. And still we have the prospects and opportunities in today's world. So I welcome you all for this topic. Let me start with this, that today is the time where we are very much covered with the opportunities. Lots of opportunities are around us, but still we don't know how to find those opportunities, how to work on those opportunities, and what are the and then we start working on that, we face different challenges. So we are going to discuss, or we are going to I'm going to talk about this in the next few minutes. Let me tell you that what is the women entrepreneurship. Maybe you must be knowing that entrepreneurship is something you have the idea and you are finding some problems and in the society, and you are working those ideas to convert the solutions to figure it out those problems. I think we have to be clear about this, or maybe we want to know what exactly I'm going to do in this entrepreneurship. So when you say that women entrepreneurship face different challenges, opportunities in the today's business world. Even though you are a woman, you are in the world where we have the both women and men in this business world, and we have to work into the same field or into the same world. And that is why it includes different gender biases, accessing funding, of course, balancing home and work, and different family responsibilities. Though the society has changed, but whatever is the traditional formats we are operating in the B town and other places, maybe we are going to face this kind of challenges, and we will discuss that, how to tackle or what are those challenges, and still how we can overcome those with the opportunities available with us today. Despite these challenges, female businesses have still a good leaders made a significant change in the society. मुझे ऐसे लगता है कि हमें ये पता है कि एज ए वुमेन, महिला होकर हमें बहुत सारे परेशानियों से, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, परेशानियां होती है, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो होने के बावजूद भी आज के दिन में महिलाओं के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, गवर्नमेंट से है, सोसाइटी से है, फैमिली से। हमें ये दोनों का बैलेंस देख के हमें ये देखना है कि हमें अगर कुछ करना है, हमारे एंटरप्राइज में कुछ करना है, हमें कुछ अपना खुद का एंटरप्राइज खड़ा करना है, हमारा कुछ बिजनेस एक लेवल पे हम लेके जाना चाहते हैं, तो हम ये दोनों चीज देख के
हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे ये जो चैलेंजेस है वो उसके ऊपर हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली चैलेंजेस मतलब क्या, मतलब हमें एक्चुअली क्या परेशानियां हो सकती है या व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस एज अ वुमेन इन दिस बिजनेस वर्ल्ड। सो फर्स्ट, नंबर वन, which everybody knows, that gender bias and discrimination. हम यही समाज में काम कर रहे हैं लेकिन हमें अनकॉन्शियसली वी फेस अ जेंडर बायस। अनकॉन्शियस बायस जानबूझ के नहीं होता है, लेकिन हम सदियों से कुछ चीजें चली आ रही है और वो हमारे मन के ऊपर इतने प्रभावशाली होती है कि कोई भी डिसीजन लेने के टाइम ये चीजें हमारे डिसीजन मेकिंग में आती है, हमारे मतलब एक समाज के डिसीजन मेकिंग में आती है। और इसीलिए women entrepreneurship often face unconscious networking, hiring and raising capital, different advancement of the workers. So maybe unbiased एक ये पुरुषों की मक्तेदारी है, या यहाँ पे स्त्री से ज्यादा, महिलाओं से ज्यादा मेल मेंबर्स ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ऐसा एक मन में एक कुछ चीजें अगर रहेगी तो अनकॉन्शियसली वो चीजों की वजह से अलग तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं और ये बहुत सारे फील्ड में हमें फेस करना पड़ता है। सो आई थिंक जेंडर बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन is one of the thing where we are facing unconscious bias in the field. Second, we can say that is a stereotyping. Stereotypes about the female leadership abilities, risk-taking abilities, negative impact on different opportunities. आप अगर देखेंगे कि एज अ महिला आप ये रिलेट कर पाएंगे कि जो रिस्क लेने की जो एबिलिटी होती है वो महिलाओं की थोड़ी कम होती है पुरुषों से ज्यादा, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारी समाज की जो व्यवस्था है उससे हमारे ऊपर वैसे हिसाब से तैयारी की जाती है बचपन से कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो इनडायरेक्टली वी आर ब्रॉट अप इन सच अ एनवायरमेंट। सब जगह पे सब फैमिलीज ऑफ कोर्स वैसे नहीं है, एक्सेप्शन हर एक में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल सोसाइटी. So maybe because of all these things, maybe we have developed little less risk taking ability, which is more important in the business. अगर आपको काम करना है, अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, एंटरप्राइज करना है, तो हमें रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लेने की एपिटाइट होनी चाहिए और वो महिलाओं में थोड़ी सी कम होती है और इसीलिए जितने भी सारे डिसीजंस होते हैं वो इसके अराउंड होते हैं। तो ये एक चैलेंज हम कह सकते हैं कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो हमें हमारे लिए निगेटिवली काम करती है। हमारा ये जो नेचर है, ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट वेज to overcome those things, but I'm just highlighting the things which are again affecting into the business world. Then third, we can say that discriminating practices, like we are negotiating, dealings रहते हैं, negotiation करना है, बहुत सारे चीज होते हैं, उसमें भी हमारी जो तैयारी होती है वो बहुत कम होती है और इसीलिए वापस वही कि जिस हिसाब से हमारी अपब्रिंगिंग होती है इसके हिसाब से ये दोनों डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं कि निगोशिएशन कैपेसिटी है, डील करने का तरीका है। सब फील्ड में नहीं, लेकिन कोई कोई फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे महिलाएं कम पड़ती है और इसीलिए ये भी एक हमारा एज अ पर्सनल ट्रेट ये एक चैलेंज करके हमारे सामने आता है। सो वी कैन से अनबायस unconscious bias, you can say stereotyping and discriminating practices. So these are all the gender bias and discrimination we face when we are in the business world. You can say that these are the things we are getting affected as a challenges when we are with the male member in the society because of these things. Second challenges, we can say that lack of access to the funding and resources. हमें कोई भी चीज करनी है, एंटरप्राइज खड़ा करना है, बिजनेस में कहाँ पे जाना है, तो आप अगर देखेंगे समाज में या सोसाइटी में तो वी आर फेसिंग दैट मेल डोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। अगर आप देखेंगे 100 बिजनेस का अगर एज अ केस स्टडी करने के लिए लिखेंगे तो जो पहले पॉइंट्स डिस्कस किए वहां पे भी आप देखेंगे कि वहां पे भी मेल डोमिनेट बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट नेचर एंड वीमेन, महिलाएं थोड़ी कम होती है और इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लैंडस्केप में भी अगर हम देखेंगे तो इसीलिए वो हमें थोड़ा
difficult होता है, it gets us little difficult to get the investment planning and funding and resources, access to the resources and funding. For example, women entrepreneurs always face challenges in accessing venture capital, angel investment due to the dominance of the आपको ये सब पता होगा. I'm not sure whether you are aware of it or not, but अगर हमें कुछ funds खड़ा करना है, हमें ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, सो वी हैव अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फंडिंग. पहले जमाने में कुछ अलग फंडिंग्स होते थे, अभी आज के तारीख में बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन वहां पे भी हम देखते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू अप्रोच इन द पर्सनल फाइनेंस फंडिंग, you are going into the angel investment or maybe venture capital investment. So वहां पे भी अगर हम देखेंगे तो मेल डोमिनेंट negotiation practices ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है. ये of course this can be overcome, but I'm just highlighting the challenges we are facing into different scenarios. So maybe investment landscape, maybe we are facing little difficult access into the funding plan. Second, you can say financial services desperates. Women-owned businesses encounter difficulties in obtaining adequate financial services and loans compared to men members. क्योंकि कहाँ पर भी अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट आती है तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है, बहुत सारा एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, मुझे पैसा क्यों चाहिए, वो पैसा मैं लेके कहाँ पे यूज करने वाली हूँ, कैसे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे हिसाब से मेरा वर्किंग होगा, मेरे ऑपरेशंस कैसे होंगे, उसके हिसाब से मेरे रिकवरी, मतलब हाउ आई विल अर्न द प्रॉफिट्स बाय इन्फ्यूजिंग दिस फंड्स इनटू माय बिजनेस. ये सब चीजें के ऊपर अगर सोचने के बाद व्हेन यू अप्रोच टू द फाइनेंस कंपनीज, वहां पे भी अगेन ये कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि महिलाएं ये फाइनेंस और ये लेवल में यहाँ पे वापस discrimination किया जाता है, and that is why again we face a lot of difficulties attaining to those kind of funds accessibility. तीसरा बहुत important topic है जो resource limitations. You can say limited access to the mentorship, leadership, networking opportunities and business support programs. आप देखेंगे कि पहले जमाने में अलग तरीके का फॉर्मेट होता था. आज हमें कोई भी व्यवसाय करना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मेंटरशिप की जरूरत है. मतलब व्हेन यू आर want to reach somewhere, somebody has already reached there, so we have to walk the road, we have to read that path. So like mentorship is always important, so that you are holding the hand, somebody is holding your hand, and it is very easy to walk the road who has already walked that road. So maybe वो mentorship में भी बहुत सारे दिक्कतें. As a woman, again I would say that our mindset and our traits, natural default settings would always differ, and that is why we always face challenges into gaining these resources. Like mentorship programs है, networking के groups रहते हैं, networking opportunity, because of a lot of other responsibilities and other things, we always feel not to engage into this network opportunity. There are different opportunities, you have to work on the networking, and that is why as a women we always feel challenging into tapping into those resources as well. And there are different business support programs. You must be knowing that there are online, offline, lot of programs are going on, so you have a better option where you can access those programs. But again, as a women, many times we have limitations to access those programs. Of course, there are different reasons which we will see, but maybe because of those things we have a limitation. So maybe again I will just recap that male dominant investment landscape, about, of course, about the lack of funding and resources, then financial services, male dominated, and again resources limitation. If you want to reach into this resources, again that would be a challenge. Then another important topic for women is balancing the work and family responsibilities. Whether you are working in a nuclear family, whether you are working in a joint family, whether you are from A town city, whether you are from B town city, or whether you are from village, you are from any scenario, any landscape, any situation,
as a woman, still, of course, society has changed. A lot of things have changed with the time. In today's time, these are the things have changed a lot, but still, we face difficulties in the balancing the work and family. Like there are challenges like childcare. So if women enterprise often face difficulties balancing the business responsibilities and childcare and family obligations. हमें हमेशा बहुत सारे चीजें होती है कि घर में छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी है और मेरा एंटरप्राइज है, तो मुझे यहाँ पर भी उतना ही समय और इम्पोर्टेंस देना है जितना समय और इम्पोर्टेंस मुझे मेरे फैमिली के लिए देना है. और हमेशा एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अलिखित नियम ऐसा घर में होता है कि हर चीज की जिम्मेदारी ये स्त्रियों की है. ये लिखित नियम नहीं है, बहुत सारे फैमिलीज अलग है, ये जरूरी नहीं है कि थंब रूल है, बट मैं ओवरऑल जो आज के समाज में और आज के तरीके से मैं जो देख रही हूँ, वहां पे हमें फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट फैमिली एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट योर बिजनेस. ये हमें बताया जाता है और इसीलिए हमारा भी नजरिया हमेशा ऐसे बनता है कि मुझे पहले मेरे बच्चे और घर देखना है और बाद में मुझे मेरा एंटरप्राइज देखना है. हालांकि I have to give the importance to both. My time is important for family as well as my business. My accessibility is important to my business and family, but still we have facing the challenges how to cope up these two things while handling family and enterprise. Second thing is cultural expectations. We have a cultural norms, we have a society expectations, often always that burden and peer pressure एक होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो वापस अलिखित सोसाइटी समाज के जो नियम है उसी में हमें वो एक बर्डन आ जाता है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, तुम्हें ऐसे करना है. तो ये सब इसमें हमेशा अगेन यू फेस चैलेंजेस while working on our enterprise or when you are doing in the business. So maybe cultural expectations जो समाज और फैमिली के होते हैं उसमें भी हमें एक we face the challenges, I could say, in that as well. Third point, I can say that workplace flexibility, like access to flexible work arrangement and policies which are essential for women enterprise are effectively manage their professional. बहुत सारे कंपनीज में या बहुत सारे बिजनेसेस में हमेशा हमारे वो फ्लेक्सिबल आवर्स की वो अपॉर्चुनिटी होगी ऐसे जरूरी नहीं है. अगर हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है या हम हमारा एंटरप्राइज ऐसे हिसाब से सेट कर पाते हैं कि मुझे दोनों जगह पे मैं फ्लेक्सिबल हो सकती हूँ, या तो घर में फ्लेक्सिबल हो सकती हूँ या मेरे काम के जगह पे फ्लेक्सिबल हो सकती हूँ. सो बट व्हेन यू आर अ न्यू वेंचर, व्हेन यू आर it's a new enterprise, you are always having more time expectation, more time required to set up that baby. So that is also a baby and you have another baby at home, so your both the babies are, you have to take care of your both the babies. So you are always in a dilemma like ये baby को ध्यान दूं या ये baby को ध्यान दूं, क्योंकि ये भी मुझे अगर यहाँ पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो मेरा बिजनेस बड़ा नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है तो मैं आई एम फीलिंग injustice to my family and my child. So ये भी एक flexibility जो है वो that is also another challenge for women when you are into the enterprise. So now we are seeing that these are all the things we are seeing. We are facing different challenges. Of course, we are aware about it. We are trying to cope up about it. We are trying to figure it out about it, and a lot of women are working on that on their own with the support, with the training, with the learnings. The things are changing in today's world. A lot of programs are going on. So maybe I feel that though we have a challenges to face, though we have difficulties to face, though we have different mindset scenarios to face, but we have very great opportunities in the today's world open for women. I think you will agree to me that आज के तारीख में महिलाओं के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जितनी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, उतनी सपोर्ट सिस्टम अभी तक कोई भी समय में नहीं थी. We are fortunate that if we want to do something, we can do that thing. So हमें ये excuse में रहने की जरूरत नहीं है कि I am a woman, that is why I can't do this. I have a joint family, that is why I can't do this. I have a child, that is why I can't do it.
we are always busy with giving the excuses for not doing the work. We are always busy giving excuses for not happening, things not happening. तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये समय इतना बढ़िया समय है आज की तारीख में कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं कि जहाँ पे अगर एज ए वुमन मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चीज मेरा एंटरप्राइज करना है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर फॉर आवर एंटरप्राइज. सो मुझे लगता है कि there are different opportunities for women entrepreneurs. One is diverse industry presence. Women enterprise have a growing presence across the diverse industries, contributing to innovation and economic growth. आपको पता है कि आज हमारे यहाँ से इतने इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है, इतने इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारे चीजें जो हमारे लिए बंद थी, हमारे लिए मतलब विमेन के लिए जो बंद थी, वो आज खुल चुकी है. ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, whether it is service, whether it is manufacturing, whether it is trading, whether it is whatever industry you take, everything is open up for women. So I think we are all available. All the industries are available, open for us. So you have an opportunity, you have a choice to select. Earlier you are compelled to select few things. Earlier we were compelled to go only with this. Earlier we were compelled to go ahead with the stereotype format. तो आज हमारा ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बदल चुकी है. मुझे अगर कोई इंडस्ट्री में काम करना है जहाँ पे महिलाएं कम है, वहाँ पे दिक्कतें ज्यादा है, लेकिन मुझे करना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो आज सोसाइटी से भी एक्सेप्टेंस हो चुका है कि एज ए वुमेन टू एक्सेप्ट यू, और आप काम भी कर सकते हैं. वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम वगैरह बहुत सारी चीजें. तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हमें आज हमारा चॉइस प्रैक्टिस करने के लिए मोहलत है. मतलब यू कैन प्रैक्टिस योर चॉइसेस टुडे व्हिच वाज नॉट इन द अर्लियर डेज. सो diverse industry presence is available for everybody. Then second is, you can say, supportive ecosystems. An increasing number of incubators, accelerators, then initiative, different programs are done dedicated to support and empower the women entrepreneurship. Like you are saying, your college has organized a very fantastic program which will help you to how you can work on the women entrepreneurship. You have a different industrial programs to understand the industry. So right from your college and after that also, there are different programs going on around the world in today's day to support the entrepreneurship, to support the business growth, to support the entrepreneurship development and all that thing. You can have the access to different incubators. There are different support systems which will help you in the finances, in the operations, in the production, in the administration, how to groom your business, how you can infuse your investment, how you can work on the plan, and how you can get into the profitability. All the things are available, and all these things are very easily available. Like we are doing online session today. It is so easy for us to not to travel and save our time and invest our energy onto the directly onto the subject where you would invest your time somewhere else. So maybe options are available. You can go for online, you can go for offline, you can go for incubators, accelerator, different support programs are available. So maybe this is one of the ecosystem has been supporting ecosystem has been developed in last few years, and maybe online system has been groomed up very drastically and very fast after the लॉकडाउन. मुझे ऐसे लगता है कि आज हमें हर चीज जो पहले नहीं थी वो अवेलेबल है. हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमें चॉइसेस नहीं मिलते थे. आज हमारे पास सब टाइप के चॉइसेस हमें करने हैं, सिर्फ हमें करने की जरूरत है. सो आई थिंक दैट सपोर्ट सिस्टम इज this ecosystem has been developed very nicely in last few years. Then you can say advantages in technology. आपको पता है कि 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल रही है और जिंदगी हमारी बदल चुकी है. जिंदगी में टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हम जिंदगी टेक्नोलॉजी के बिना जी पाना डिफिकल्ट है, ये लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आए हैं जो हमें और ज्यादा तरक्की करने के लिए सपोर्ट करें. तो पहले जमाने में हमको बहुत सारा चीज फिजिकली करना पड़ता था,
बहुत सारे चीज है जो एडवांसमेंट नहीं होती थी, इसीलिए समय जाता था। एक एंटरप्राइज होने के बाद उसके बारे में पढ़ाई करो, उसके बारे में सीखो, उसके बाद वो तैयार करो, उसके बाद उसको नर्चर करो और बाद में उसको बड़ा करो और बाद में उसमें से प्रॉफिट लाओ। ये टाइम स्पैन मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इतने सारे टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल है कि बिजनेस ग्रोथ और ग्लोबली, मतलब आज यहाँ बैठ के हम ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ बैठ के मेरा प्रोडक्ट अमेरिका में मैं बेचती हूँ, मुझे कोई भी कंट्री में अगर जाना है तो मैं यहाँ बैठ के ई कॉमर्स के इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। हमें जो चीज चाहिए वो हम बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, अदरवाइज पहले हमें अगर एक एक प्रोडक्ट नहीं जा सकता था। मुझे अगर एक चीज बेचनी है तो ई कॉमर्स की वजह से आई कैन गो एंड सेल इन यूएस, आई कैन गो एंड सेल इन यूरोप, आई कैन गो एंड सेल इन यूके। सो ज्योमेट्रिकली टेरिटरी वाइज अभी मैं एक प्रोडक्ट भी बेच सकती हूँ, वैसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। पहले हमें एक बल्क प्रोडक्शन करना पड़ता और बल्क जाता था बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग एंड अदर थिंग्स वेर इन्वॉल्व। So because of technology, it is available, it is possible, it is very very easy also. भले ही हमें उसके बारे में सीखना पड़े, आज जानकारी नहीं हो, लेकिन ये सब चीजें हमें अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी हमारे सपोर्ट के लिए है, टेक्नोलॉजी हमारे ग्रोथ के लिए है, टेक्नोलॉजी हमारे डेवलपमेंट के लिए। अभी कैसा उसका उपयोग हमारे जीवन में करना है, उसका उपयोग कैसे हमारे बिजनेस ग्रोथ में करना है और ग्लोबली पहुंचने के लिए करना है, ये हमें सीखने की जरूरत है। जो पहले दूसरे तरीके से ऑफलाइन की चीजें सीखते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी अगर सीखेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन है, challenges and opportunities are same, opportunities are more I would say because of the technology, लेकिन ये बहुत चीजें बढ़ी हुई है पहले जमाने से। आई एम ऑलवेज कंपेयरिंग विद द अर्लियर टाइम्स बिकॉज वी आर एट द बेस्ट टाइम इन टुडेज वर्ल्ड। सो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी के खुद के चैलेंजेस है, लेकिन वो आई वुड से दे आर सपोर्टिंग मोर फॉर आवर ग्रोथ। सो these are all the opportunities we can say as this. उसके बाद में support and initiative for women entrepreneurs are done very much in the society. नेटवर्किंग इवेंट्स रहते हैं, वर्कशॉप्स रहते हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स मतलब you can meet different people, you can discuss about business, you can discuss about the challenges, you can discuss about different resources. So networking groups, abhi lot of people are networking groups are available online and offline. You can go offline meetings to meet the people, you can chit chat with them, you can exchange your business, you can exchange your ideas, you can discuss about your problems, you can discuss. So these networking opportunities are available online offline where you can, which will be again support to your business. मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आई वुड डिस्कस somebody की जिसका सिमिलर बिजनेस है, या कोई सिमिलर बिजनेस भी नहीं है लेकिन बिजनेस के प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज सेम होते हैं, तो मैं किसी से बात कर सकती हूँ कि अरे मुझे XYZ में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे रिसोर्सेस में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे फंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, या मैं यहाँ पे स्टक हुई। सो हाउ यू हैव डेल्ट विद दिस, आपने ये कैसे सॉल्व किया, आप कैसे हो कर चुके हैं। मतलब इफ आई एम इन 1 lakh to 25 lakhs range, आई वुड डिस्कस दिस सेम प्रॉब्लम जो 25 से 50 लाख के रेंज में है। मतलब जो बंदा या बंदी 25 या 50 लाख में है, उसने ये जो इनिशियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इनिशियल जो टीरिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं एंटरप्राइज के, वो ऑलरेडी सॉल्व करके वो वहां तक वो मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो नेटवर्किंग में हमें ये जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि यू कैन डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी पास दैट रोड। तो ये नेटवर्किंग में यू कैन discuss, you can solve, you can get the ideas, you can find the resources. So ये networking के groups online offline available है जो you can help to grow your business. Mentorship programs, you can say support system and mentorship program is another thing where specialized mentorship programs are available which will guide you to support your enterprise, empower you to overcome your barriers and excel in the ventures. Like for example, as I said, I'm taking the mind training programs. As a woman, we face a lot of challenges because of our mindset. So these kind of programs are available. A lot of people are there who are working on the mindset, who are working on the mind training. A lot of people are there, organizations there who are focused on the funding programs. A lot of organizations conduct the workshops and different seminars only on the operations or marketing, sales. So whatever
program you want to focus, you have opportunities available to attend these workshops and seminars focused on the subject, which will help again to your growth. Like मुझे अगर लगता है कि मुझे ये एरिया में मैं कम पढ़ रही हूँ, मुझे ये एरिया में थोड़ी हेल्प चाहिए, तो आई कैन फाइंड आउट ओनली विद दैट सब्जेक्ट. मुझे माइंडसेट, मुझे ये चैलेंजेस कैसे करने हैं समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फंडिंग समझ में नहीं आ रहा है, फंडिंग का कैसे करना है, मुझे ये सब जो चीज अगर मुझे लगता है कि मैं वहां पे मेरा थोड़ा माइनस है, तो आई कैन find the mentorship program. Individual mentorships are available in today's world, so you can approach them, you can figure it out, and you can get the help to develop your business. Third is financial aids and grants. I think access to the financial aids and grants towards our businesses facilitates the growth and sustainability in competitive business landscape. Different programs, financial programs are available only for women, which you can use them for different things. You must be aware that different government has specialized programs only for women entrepreneurship. मतलब अगर हमें कुछ हमारा बिजनेस खड़ा करना है और मुझे एज अ विमेन हेल्प चाहिए, तो विमेन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के भी पर्सनल तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट के आज की तारीख में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको सब्सिडाइज फंडिंग की जाती है. आपको 10,000 से लेके 50 लाख तक, आपको जैसे जैसे इंक्यूबेटर्स में जैसे जैसे जरूरत है वैसे हिसाब से 10,000 से लेके 50 लाख तक एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. यू कैन अप्रोच गवर्नमेंट के साइट में जाके. हमें बहुत सारे चीज स्टेट गवर्नमेंट्स के भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, तो हमारे लिए बहुत सारे फाइनेंशियल एड्स अवेलेबल है, ग्रांट्स अवेलेबल है. मतलब आप ट्रेडिशनली हम बैंक में जाते थे, अभी नए तरीके से हमारे पास पर्सनल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, ऐसे भी प्रोग्राम्स है. लेकिन हमें अगर कम बजट, कम इंटरेस्ट रेट में अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल एज ए वुमेन मैं अगर बोलती हूँ कि मेरा ये प्रोग्राम है, मुझे यहाँ पे यहाँ ऐसे हिसाब से बिजनेस खड़ा करना है, मेरा इतना समय लगेगा, मुझे इतना पैसा लगेगा और इतना समय मुझे खड़ा रहने के लिए लगेगा, ऐसा प्रोग्राम अप्रोच लेके हम जाते हैं. तो ऐसे गवर्नमेंट के पास प्रोग्राम है जहाँ पे आपको एक समय दिया जाता है, वो समय आपको पैसा मिलता है गवर्नमेंट से. उसका इंटरेस्ट रेट बहुत, मतलब आप पकड़ के चलो निग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट रहता है. वो इंटरेस्ट रेट पे आपको फंडिंग अवेलेबल होती है. फंडिंग अवेलेबल होने के बाद कल से मुझे EMI नहीं चालू होता है, मुझे बिजनेस खड़ा करने में, इन्फ्यूज करने में, ग्रूम करने में, नर्चर करने में जो समय चाहिए वो भी समय दिया जाता है. और वो समय खत्म होने के बाद तब तक मुझे टैक्सेशन में भी मोहलत मिलती है. बहुत सारे ऐसी चीजें गवर्नमेंट्स के आज ग्रांट्स और डिफरेंट एड्स आर अवेलेबल विच वी हैव टू, अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, बहुत सारे हैं. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग यू दैट दिस इज अवेलेबल विद अस. सो सब्सिडाइज प्रोग्राम, खड़े रहने के लिए समय और फिर टैक्सेशन में भी बहुत अच्छा. तो मुझे अगर 3-4 साल अगर मैं बैंक से लेती हूँ या पर्सनल लेती हूँ, तो मेरा इमीडिएटली सेकेंड मंथ से मुझे उसका इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसा भरना पड़ता है. यहाँ पे मुझे समय मिलता है, तो मुझे बिजनेस खड़ा करने में समय मिलता है, मुझे सब्सिडाइज रेट मिलता है, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है. तो वो पैसा जो मेरा बचता है वो वापस मैं मेरे बिजनेस में डाल सकती हूँ. तो ये चीजें आज के तारीख में एज ए वुमेन इट इज अवेलेबल. So let me just summarize you from the beginning what we have discussed. That when we are talking about women entrepreneurship, we have discussed that there are a lot of challenges in front of us. One is gender bias, lack of family and family funding and different resources, lack of families, then balancing work and family responsibilities. Then after that we have seen that balancing the things, and then we are seeing that if we are having a challenges, uske साथ ही हमारे पास opportunities भी है. Opportunities is industry, diverse industry presence, supporting ecosystem and advancement in technology. And सबसे बढ़िया और सबसे important is support and initiative by the different organization and different programs are available. So if you see the overall scenario of the industry or in the business world, opportunities and support system is more than the challenges.
challenges are in our hand, which we can overcome. But I think opportunities are not in our hand. Support system is not in our hand, which is provided by the society and government, which is available in today's world. So I think we have to take this uh, as a growth plan of your, rather than getting into this, I would go for my business and I can work toward that. तो मुझे अभी से, जब भी मैं अभी पढ़ रही हूँ कॉलेज के समय से, मुझे मेरी सोच यहाँ पे विकसित करनी है कि मुझे कुछ ना कुछ मेरा खुद का खड़ा करना है. मैं कुछ ना कुछ मेरा खुद का जब भी खड़ा करती हूँ तो मैं 5 से लेके 50 से लेके 500 से लेके 5,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती हूँ. मैं इतने लोगों को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ. सो आई विल बी द सपोर्टर इन दिस सोसाइटी. आई विल बी अ हेल्पर टू हेल्प द फैमिलीज. तो indirectly I'm contributing to the society by helping giving them the employment, and I'm helping to the nation by giving and helping them in the growth of the economy. तो मुझे ये दो चीजें अगर मुझे बाय डिफॉल्ट मिलती है, मतलब मुझे, मैं अगर मेरा व्यवसाय खड़ा करती हूँ तो एक तो मुझे मेरे इंटरेस्ट का काम करने में खुशी होती है. आई विल गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्क. ये सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये सेटिस्फैक्शन के साथ दो चीजें फ्री में मिलती है. यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी एंड यू आर हेल्पिंग द नेशन, नेशंस ग्रोथ. सो व्हेन यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी यू गेट इट मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल फोल्ड्स, आपको सब चीजें वापस मिलती है. तो ये जो चक्कर है कि मुझे पहले देना है और फिर बाद में मुझे मल्टीपल फोल्ड्स में मिलता है, ये निसर्ग का, ये नेचर का कानून है. मतलब दिस इज अ नेचर्स लॉ. सो आई थिंक वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट, and maybe if we can think about it, and if we can keep our direction, and if we can develop our mindset towards the entrepreneurship, maybe it is very easy and we will start getting the roadmaps, we will start getting the opportunity, we will start getting the ways out if we have decided where we want to live. So thank you very much for listening, and thank you very much. I appreciate and my sincere gratitude to Berkeley College for having this wonderful topic discussed today. Thank you. Thank you, madam, for enriching us with your valuable perspectives. Now, I request Professor Himanshi Mehta from the Faculty of Accounting and Finance Department to propose a vote of thanks. Over to you, madam. Thank you, Shikta ma'am. I am Himanshi Mehta here for presenting the vote of thanks. A heartfelt thank you to Mrs. Vrinda Acharya, an entrepreneur of Swaraj Fashions Private Limited, for accepting our invitation, sparing her valuable time, and sharing her wealth of knowledge. I extend my thanks to our principal, Dr. S.B. Karande, sir, for his constant encouragement. Gratitude to our Vice Principal, Dr. Mahesh Auti, sir, for his constant support and guidance in organizing such events. I appreciate the efforts of all the organizers, the coordinator of the self-finance courses, our faculty members, and special thanks to the technical team. Finally, a big thank you to all the YouTube viewers for their participation. Thank you all. Thank you, madam. Acharya madam, thank you. Thank you very much. Thank you, Himanshi madam. With the permission of the principal and vice principal, I declare this session is over. Once again, thank you everyone for your active involvement.